बताइए प्रावधान ले आए आप जिसमें अपील है डीजीपी को प्रोवाइडेड? यस प्रावधान दिखाइए। वो प्रावधान नहीं है कि डीजीपी इज अ रॉन्ग पर्सन जिसके सामने अपील हो गई है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन एडवाइस करता है? अगर वकील साहब को इतना ही पेशेंस नहीं है कि किताब देखें सही एडवाइस दें, then what can be done? That appeal has been rightly rejected because it is not the forum for appeal. For that I brought a judgment that which says that if a appeal has been made before a wrong forum, it can be condoned. And it can be condoned. How can that forum decide appeal? It was for you for 6-7 years. You contested a matter before the High Court. Yes. Did you ever say that it has been filed before a wrong forum? I may be allowed to withdraw it and file it before the proper forum. Did you ever say that? Because you never bothered to open the book and see that what are the rules, what are the regulations, which is the appropriate authority to file appeal. Yes. That's the whole problem. Yes. That lawyers, once they decide, they know everything. Or anybody for that matter, even speaking for myself, hey, I decide that I know everything, I will be perished. As per this judgment, the appeal was made in 1995, and it was decided after the direction of Honourable High Court in 2006. Yes. So this judgment says if the pendency. Vakil sahab, yes. Come back to the basics. Your case is that you have been discharged simpliciter during probation. Yes. Now, what is the judgment on this point? That show me that there lies an appeal because it is not a disciplinary action which will give you a cause of action to file. Firstly. Secondly, come to the crux of the matter. Show me the law or judgment which says that discharge simpliciter during probation period is bad in law. You cannot circumvent basic responsibility to address the court. The appeal. The first question which my lords have forwarded before me, that whether it is a termination or it is a removal. For that I never posed this question. Sorry, you are misled. इसने कहा आपको ये क्वेश्चन कहा किया मैंने कि इट्स टर्मिनेशन और डिसमिस? आई एम श्योर दैट इट इज डिस्चार्ज सिंपलिसिटी ड्यूरिंग प्रोबेशन, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये तो बताइए मत, ये क्वेश्चन मत बनाइए जो क्वेश्चन है नहीं। For that I can satisfy that it is not a normal discharge method. Before that, because रीडिंग बताइए पहले, फिर बताइए रीडिंग्स बताइए। इट इज नॉट अ डिस्चार्ज सिंपलिसिटी। For that in paragraph 5.9 जी 9 yes it says in given cases respondent have not only issued show cause notice twice to the respondent, but they have also subjected him to transfer from Bhopal to Sagar, and ultimately they have issued impugned order of termination without allowing him to complete 2 years of probation period. The respondent have filed 2 returns in the previous round of litigation, wherein they have repeatedly averred that they were not happy with the performance of the petitioner in service, and they have widely made their mind to terminate the service of the petitioner out of unsatisfactory performance even before he could complete his. चलिए यहीं रुक जाते हैं। ऐसा कहाँ प्रावधान है to report a satisfaction about the performance they are required to wait for complete 2 years? प्रावधान बताइए। आप जो भी बहस करेंगे प्रावधान बताते जाइए, टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे। वकालतनामा भी आपका जो अगला है उस पर साइन नहीं है, तो पहले पे साइन गलत है, दूसरे के साइन गलत है, दोनों साइन बहुत भिन्न है। देख लीजिए पहला वकालतनामा और दूसरा वकालतनामा। अभी सारे धक्कर अगर आप ही को करने हैं तो ठीक है। मैरिज पे बताइए कहाँ प्रावधान है ये कि 2 साल का प्रोबेशन अगर है तो एम्प्लॉयर जो है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कहाँ प्रावधान है? प्रावधान बताइए वकील साहब। On particular this point, the provision says that if a person is removed during the probation, it would not be conducted as a major penalty. वो penalty की minor penalty मानी जाएगी उसको? वो नहीं मानी जाएगी। That is against me. Yes, point is against me. बताइए फिर अपील कहाँ से, किस प्रावधान में एडवाइस करिए अपील फाइल करने के लिए? अपील तो जो है सीसीए रूल्स में दी हुई है, अपील दी जाती है ऑर्डर ऑफ पेनल्टी के खिलाफ अपील का प्रावधान है। तो ये अपील तो ना हाई कोर्ट ने देखा पहले ना आपने देखा कि अपील का जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही नहीं है अगेंस्ट डिस्चार्ज सिंपलिसिटर। This is the mockery of justice। आप हाई कोर्ट हुआ है 96 की अपील 2006 में आपने डिसाइड करवा ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन से। आपने ना हाई कोर्ट बताया कि अपील का प्रावधान किस प्रावधान के अंतर्गत आपने अपील प्रेषित की है। read that impugned order which I am challenging. हाँ पढ़िए ना। says कि annexure P3 at page number 19. I am reading from 4th line. 20 साल हो गए इस मैटर पेंडिंग रहते हुए। 29 साल 95 का आदेश है और हम 2024 में है, कोई स्टे है नहीं। So on this point it says, क्या पढ़िए P3 पढ़िएगा। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय सागर स्वयंसो, जिसमें इस कार्यालय के आवश्यक स्वयंसो दिनांक 28/10/93 के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति की गई थी कि सेवाओं की आवश्यकता न होने से उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव
प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। तत्काल प्रभाव से they have been removed. Now my lords may kindly see the notices which I have annexed. Lords, first notice is at page number annexure P8, page number 25. Lords, this notice was issued by पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना भोपाल लोकायुक्त। Lords, it says इस कार्यालय में पदस्थ सो एंड सो से संबंधित एक ड्राफ्ट कार्यालय सहायक द्वारा आपको टाइप करने हेतु दिया गया था, दिनांक 8/7/94 को दिया गया था। उक्त ड्राफ्ट आपने यह कहकर टाइप करने से मना कर दिया कि यह काले थापा से संबंधित होने से आप इसे टाइप नहीं कर सकते। Notice they have issued that I am not completing the work which has been assigned. Thereafter, may kindly see P9 on this page number 26. Yes. On this ground, they have transferred me from Bhopal to Sagar. ठीक है. Did you challenge that order of transfer? I have not challenged. Thereafter, what is the relevance of that order? Thereafter, my lords, may kindly see P10. इसमें इन्होंने when I have joined the posting in Sagar, my lords. Again, a notice was issued, my lords, to me. मौका दे रहे थे बार-बार काम सुधारने के लिए, लेकिन जब आप सुधारने के लिए तैयार नहीं रहे, आपने आगे हाईकोर्ट से कुछ करवाएंगे, तो उन्होंने आपको इसमें डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने ठीक है, आप जाके हाईकोर्ट में देख लेना सब चीज। तो इसमें ने फिर से कहा कि मैं कहीं पे जाके इंस्पेक्टर बन के पैसे ले रहे थे आप। जी जी। एलिगेशन आपका लोक कल्याणकारी कार्य है, क्या बाबू होकर लोकायुक्त के इंस्पेक्टर बन के पैसे इकट्ठे कर रहे थे? हमने तो देख लिया हमने। हम बोलना नहीं चाहते थे कि आपके इस लोक कल्याणकारी कार्य के लिए आपको। One more thing, my lords. I just want to put this judgment. हाँ दीजिए ना। स्पोर्ट के लिए कि रेट अपील के लिए जजमेंट पढ़िएगा। Because I'm reading it para 6. The Constitutional Bench of Honourable High Court in the matter of Honourable Supreme Court in the matter of Jagdish. Sorry, my lords. In the matter of Jagdish Mitra versus Union of India has considered the scope of applicability of Article 311(2) of the Constitution of India in the case of dismissal or removal of the temporary employee. In the case, the employee who was working as a temporary second division clerk in the General Post Office, his service were terminated on the ground that it was found undesirable to retain him in a government service, and hence, with 1 month notice, he was discharged from service. The Honourable 311 लगेगा क्या इसमें? प्रोबेशनर के केस में आर्टिकल 311 लगता है क्या? आप जजमेंट साइट कर रहे हैं, आपका 2018 का रजिस्ट्रेशन है, 6 साल हो गए आपको वकालत करते हुए, 311 लगेगा क्या? 311(2) होता है डिस्मिस विद रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर सर्टेन कंटीजेंसीज, and there is no departmental inquiry. It's a discharge simpliciter. So how Article 311(2) will be applicable in case of a discharge of a probationer? बताइए, समझाइए ना थोड़ा प्लीज। I was just trying to नहीं पॉइंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखा आपने? आर्टिकल 311 क्या कहता है? लाइक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाइक। बताइए वसी जी, आपको क्या कहना है? My lord, there were certain instances where my lord explanation was sought from him while he was deciding his services. My lord, there is just a judgment with respect to my lord distinction between simpliciter termination and punitive termination. My lord, paragraph number 13 is relevant, wherein my lord the judgment of my lord State of Punjab versus Balbir Singh has been relied, my lord. It has been mentioned, my lord, that the order of discharge simpliciter prima facie is not punitive, it being in terms of Punjab such and such. But the question still is whether the incident which led to passing of that order was motive or induced factor, or was the foundation of the order of discharge. Thus, the principle that in order to determine whether the misconduct is motive or foundation of order of termination, the test to be applied is to ask the question as to what was the object of inquiry. If an inquiry or an assessment is done with the object of finding out any misconduct on the part of an employee, and for that reason his services were terminated, then it will be punitive in nature. On the other hand, if such an inquiry or an assessment is aimed at determining the suitability of an employee for a particular job, such termination would be termination simpliciter and not punitive in nature. Now here, my lord, there were even allegations, my lord, that he was impersonating himself, and in fact he acknowledged it also, my lord. Along with our written, we have placed on record all the order sheets, all the letters also. यही तो ग्रीवेंस है कि वो लोकायुक्त के सारे फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे, मैं आपको इंस्पेक्टर बताकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने उनको नौकरी से हटा दिया, आपने बिल्कुल भी करुणा नहीं दिखाई उनके। And my lord, and my lord was pleased to observe, my lord, that there is no appeal which would have lied, and he remained in appeal for almost 6 years, my lord. कहना मिल रही है सब। This petition is filed by one Sanjay Sahu, son of Shri Ramesh Sahu, who was working as lower division clerk, being aggrieved of order dated 3/2/1995, passed by the Secretary, Lokayukt Office, Madhya Pradesh, Bhopal, whereby services of the petitioner were discharged while he was on probation on account of non-requirement of his services. Petitioner is also aggrieved